So I am starting with the lecture now. Should I start? Any doubts to anyone in what we have covered till date? No, sir. So this is clear, I think. To convert from Lagrangian to Eulerian, we can apply to, this applies to what? Which kind of control volumes? This substantial derivative term applies to which kind of control volumes? Infinitesimally small. Infinitesimally small control volumes or differentially small control volumes. And the Reynolds transport theorem applies to finite size control volumes. Is that clear? So any doubts in Reynolds transport theorem? I will little bit explain in a greater detail if it is not clear to you, because I went back and I saw that there are certain things which should be much more clearer to you. So I made this diagram only to understand how well you have understood the Reynolds transport theorem. So first of all, when we are going from system to control volume or control volume to system, that is finite size control volumes. So what do you think? I am putting it here. Finite size control volume, fixed in space. Finite size control volume, moving in space. Finite size control volume, moving and deforming. So if I mark this as A, I mark this as B, and I mark this as C, how will you match? So I am putting it here, say 1, 2, 3. So which will match which particular category? How should I match? So what do you think? Are we able to understand these three conditions? What about A condition? What do you think? What is the control volume? Sir, fixed in space. Fixed in space. So this matches with 1. Is it deforming or non-deforming, this control volume? No, sir. Non-deforming. What about B? Sir, moving in space, not deforming. Moving in space, not deforming. And C? Moving and deforming. Moving and deforming. So please remember, RTT, that is Reynolds transport theorem, applies to all the three, but we have actually derived it for which case? This case, that is the simplest one. And we can extend this formula which we have derived to other two cases as well. So please remember, Reynolds transport theorem is valid for all kinds of control volume, whether they are fixed in space, whether they are moving in space, or whether they are moving as well as deforming in space. So that is what should be clear in your mind. Any doubts? And what about these? I have again put it so that you reinforce your developed concepts. So what do you think? In which category is this control volume? In which category is this control volume? This is Moving and deforming, not deforming. deforming, moving, stationary, what? Moving and deforming. Moving and deforming. Clear? Anybody? Any doubt? Moving and deforming control volume. What about this? Deforming. Deforming. Stationary.
deforming and stationary. What about this one? This is a tank in which you are sucking air, your air is getting compressed and you can take out Non-deforming stationary. non-deforming stationary. Okay. So you are correct. So Akash, you have asked that CV at T not equal to CV at T plus delta T. Why it is so? So in which case are you asking, Akash? Hello? Akash, are you there? Yes, sir, in this case. Hanji? What This is your the query? value to guess, sir. Hanji, what is your query? So control volume at T और control volume at T plus delta T same होंगे different होंगे ये समझ नहीं आ पाई बात. किस केस में? सर जो फर्स्ट एंड सेकंड केस था. नहीं, जैसे अब ये चीजें हैं, एक सेकंड वेट फॉर अ सेकंड. So in which case are you asking, say these are the three control volume approaches. So in which case are you asking whether it is or not? This thing? This is your query, Akash? Yes, sir. Yes, sir. So what is happening is, so this was some kind of a cylinder that was open at both the ends. Is that clear? This is the same cylinder. So if Yes, you sir. are going in this direction, because this person is not moving this cylinder is rigid at this location. So I should mark this Yes, sir. line. That is, it is not moving from its location. So whatever is going in, coming out, so control volume, that is a cylinder, is fixed. Whereas in this case, the boat itself is moving. So what will Yes, happen? sir. The control volume will change its location or not? Yes, sir. It will change its location. So that's why I have shown this is at time t. As it is moving forward, the control volume location itself is changing. Okay, sir. And what about this case? Location as well as the volume may be changing. Yes, sir. So this is called moving as well as deforming control volume. And likewise in this case also, when you deflate a balloon, I think you must have observed this in your childhood, that it goes very fast if you deflate it. So it is simultaneously changing its shape as well as moving. That is changing its volume as well as moving. So this is the most general case of control volume. Whereas in this case, if you were stationary and you were blowing out the balloon, so you were actually changing the volume of the control volume, although the control volume itself as an entity was not moving. So this was a deforming stationary control volume. Whereas in this case, whatever is being filled here and whatever is taken out, whatever is going, the control volume is neither changing its shape nor it is moving anywhere. So that's why this was a stationary control volume. Is that clear now? Any doubts to anyone? Now, we have derived the other day this kind of configuration, that is when the control volume is fixed in space. Why do we use this configuration? Because this is the easiest one. There is no other rationale behind deriving for this configuration, because this is the most easy one to understand, but
it is generic enough that it can be applied to other control volumes also with little bit of change in the formula. And then I will let you know what is the change in the formula if the control volume is not fixed. Now, be very careful because this concept was, I think, not clear to some of the students. So I'm repeating it in a different way now so that things are much more clearer now. Say this red part you are able to see is a cylinder that is fixed in region. So I am putting this sign here so that this depicts that this is not moving. This is stationed at a particular location. Then what does this yellow cylinder region represents? This yellow cylinder region, that is solid line region. What does this represent? Surface. The control volume. This red one is the control volume. The yellow portion is the fluid that was there at some time t. System. At time t plus delta t, that fluid has moved towards right. Are you clear? Hai? This dotted cylinder is the location of the fluid that was the solid cylinder at time t. Now this has changed its location, that is has moved out. So now it is occupying, the same fluid is occupying this space. And is that clear? Any doubts to anyone? Whereas control volume was here only, whether it was time t or time t plus delta t. Its location hasn't changed because we are deriving for finite size control volume fixed in space as well as non-deforming. Are you clear? Hai? Any doubts? Any doubts to anyone? Should I move forward now? Yes, sir. So now let me know, as delta t tends to 0, what happens? This dotted yellow cylinder coincides with what? Fixed cylinder. Fixed This cylinder. solid yellow cylinder as well as the red cylinder. Is that clear? Is that clear? So now let me know, as delta t approaches 0. So the yellow cylinder is basically a fluid. Is fluid. Right, sir. Red cylinder is the container and yellow cylinder I have only shown to show that this is the fluid. Right, sir. So this movement like हम ऐसे ले रहे हैं ना उसको mathematically derive करने के लिए. हाँ, mathematically derive करने के लिए ले रहे हैं. Because we want to build up a relationship between system and control volume. Right, sir. So that's why we are taking both of them. क्योंकि जिनमें relationship बनाना है, you require both of them, system as well as the control volume. So as delta t approaches 0, so I am now try to see, I am putting it here 1, I am putting here 2, I am putting here 3. So what do you think? What was the amount of mass? If I say mass, I am not talking in terms of general property n. If I say what is the amount of mass in the control volume at time t, what will be your answer? What is the amount of fluid in the red control volume at time t? 1 plus 2? And is that clear?
at time t. Yes. Clear? At time t plus delta t, at time t plus delta t, what is the amount of fluid in the control volume that is red? 2 plus 3. हाँ जी, 2. 1 at Just time t था, ये 2 at time t था. At in the t plus control delta volume, t. it's 2. 2 plus 3. In the control volume I am It's asking. outside. I am asking you at time t. Say this was the red cylinder. ये red cylinder में जब ऐसे था, मान लीजिए अभी ये वाला येलो डॉटेड सिलेंडर नहीं था, ठीक है, तो ये 1 plus 2 पूरी अमाउंट को बना रहा था जितना रेड सिलेंडर में था. सो से आई राइट डाउन दिस एज n1 at time t plus n2 at time t. This is the amount of n in control volume at time t. ये तो क्लियर है? This is clear? Yes, sir. Now after time delta t, what has happened? Some fluid, जब ये फ्लूइड बाहर निकलेगा तो इसकी जगह यहां से नया फ्लूइड आएगा. हाँ जी, आप समझ रहे हैं? जब ये ओरिजिनल जो था वो फ्लूइड आगे मूव करेगा, आगे मूव करके वो उसकी ये लोकेशन आ गई, तो जो ये पोर्शन होगा ये कौन फिल कर रहा होगा? जो पीछे से एंटर कर रहा है. अच्छा, right, sir. हाँ जी, क्लियर है? एनी डाउट्स टू एनीवन? Any doubts to anyone? And what is this portion then? What is 3 portion then at time t plus delta t? That has just exited this control volume. हाँ जी, क्लियर है? Yes. Yes, sir. N1 at t plus delta t is what has just entered the control volume, and N3 at t plus delta t is the amount that just exited the control volume. ये क्लियर है सबको? हाँ जी, क्लियर है? Any Yes, doubt sir. to anyone? Now with this background, now I am generalizing this. Instead of that cylinder, this is any arbitrary control volume. Any arbitrary control volume. So you have this red solid line representing the control volume. This dotted representing the system at time t. So this is what is at time t. After some time delta t, that is overall time t plus delta t, the control volume remains as such. This is again the control volume at t plus delta t. Why you are sure? Because control volume is neither moving nor deforming. So it is at its own location as such. It is fixed. So what is happening is this fluid, which was originally in this control volume, now has moved out and is at this location. So this dotted red line, this dotted red curve or loop shows you the position of the system which was originally in this solid red region. Now its location at t plus delta t. So this is the system at t plus delta. Any doubts? So this is the condition at time t plus delta t. So please be very careful, because this is in a sense the entire fluid mechanics. If you understand this, you will never get confused with any concept. अगर ये clear नहीं होगा, you will keep on getting confused as and when the concepts appear. Any doubts to anyone?
at time t and at time t plus delta t. Any doubts? T प्लस डेल्टा टी पे कंट्रोल वॉल्यूम, नेट कंट्रोल वॉल्यूम कितना होगा? t plus delta t पे नेट कंट्रोल वॉल्यूम 1 प्लस 2 प्लस 3 होगा। मतलब सर जैसे आपने ऊपर लिखा था, थोड़ा ऊपर करके NCV at t is equal to n1 plus n2। अच्छा वो मैं कर रहा हूँ, वो ये समझ आ गया, मैं वो बता रहा हूँ आपको, मैं दोनों केसेस के लिए डिटेल में बता रहा हूँ। 1 मिनट, ये क्लियर है दोनों केस? ये क्या है? यस सर। So now I'm coming to the first part, then I will come to the second part. So at time t, now try to see n system at time t is equal to what? Say I put it here, at time t n system at time t is equal to what? n1 plus n2, n1 at time t plus n2 at time t. हाँ जी, क्लियर है? And what about n control volume at time t? सर n1 at t n1 at t plus n2 at t plus n2 at t. ये क्लियर है? That is n system at t plus delta t, at t is equal to n control volume at t. इसका मतलब समझते हो आप क्या है? कि at time t पे तो ऐसे था, तो जितना n सिस्टम था वही n कंट्रोल वॉल्यूम था, क्योंकि कंट्रोल वॉल्यूम में भी उतना ही n है. So this corresponds to this configuration. Is that clear? Are you clear? Yes sir. Now what about t plus delta t? I am rubbing this off. What about t plus delta t? At time t plus delta t, n system t plus delta t. So where has the system reached after delta t has elapsed? This has taken this location. Yes, sir. So what should I write down here? N2 at T plus delta t t. plus delta t plus N3 at t plus delta t। t plus delta t. हाँ जी, क्लियर है? सर n1 क्यों नहीं आएगा इसमें? सिस्टम का मतलब क्या हुआ? जो ये पहले था, हम इसी को ट्रैक कर रहे हैं. यस सर। तो ये कहां पहुंच गया? यहाँ पे. यस सर, यहाँ। यस सर, यस सर। तो ये किसका बना हुआ 2 का और 3 का? यस सर। हाँ जी, क्लियर है? यस सर, यस। अब ऐसे बोलो n कंट्रोल वॉल्यूम एट टाइम t प्लस डेल्टा t. अब कंट्रोल वॉल्यूम में, अब प्लीज ध्यान में रखना, इस n कंट्रोल वॉल्यूम का ये मतलब नहीं है कि वो वॉल्यूम, n कंट्रोल वॉल्यूम का मतलब है अमाउंट ऑफ n इन कंट्रोल वॉल्यूम एट t प्लस डेल्टा t. तो वो कितना होगा? n1 एट t प्लस डेल्टा t प्लस n2 एट t प्लस डेल्टा t. ये क्लियर है? हाँ जी, ये क्लियर है कि नहीं? यस सर। t प्लस डेल्टा t पे भी कंट्रोल वॉल्यूम तो यही है, लेकिन इसके अंदर मास तो चेंज हो गया या n तो चेंज हो गया. यस सर। तो ये 1 क्या चीज है एक्चुअल में? अभी मैं आ रहा हूं उस पर, पहले इसको नहीं करते, 1 मिनट रुको. सो विद दिस बैकग्राउंड, कैन यू सब्स्टिट्यूट दिस n2 t प्लस डेल्टा t, दैट इज दिस रीजन. इस रीजन को आप क्या लिख सकते हो? n1 n कंट्रोल वॉल्यूम एट t प्लस डेल्टा t माइनस n1 एट t प्लस डेल्टा t. हाँ जी, क्लियर है? ये जो शेडेड रीजन है, इसको आप लिख सकते हो, ये पूरा रेड रीजन
शेडेड रीजन में जो जो अमाउंट है वो किसके बराबर हो सकती है? जितना इस पूरे रीजन में उस टाइम पे था माइनस जितना ये था। हाँ जी, क्लियर है? So this is total that is within this solid red line, and this minus is this dotted region. So you get this hatched region. So Yes. N control volume T minus N1 T plus delta T नहीं होना चाहिए? क्या क्या दोबारा से बोलो आप? N control volume T minus N1 T plus delta T, मतलब पहले वाले में T plus delta T क्यों? कौन से वाली मतलब इक्वेशन में बोल रहे हो आप? आ सकता है N कंट्रोल इससे जो सर्कल की हुई है। हाँ जी, हेलो, आवाज नहीं आ रही आपकी, हेलो। यस सर, जो सर्कल की हुई है सर। ये वाला, हाँ जी बताइए। यस सर, तो N कंट्रोल वॉल्यूम T माइनस, मतलब कंट्रोल वॉल्यूम तो हमारा चेंज हो ही नहीं रहा ना। कंट्रोल वॉल्यूम चेंज नहीं हो रहा, जो इस कंट्रोल ये एन क्या चीज है? एन इज द, अगर इसको आप मास मान लें, एन इज द से मास, तो मास तो चेंज हो रहा है कंट्रोल वॉल्यूम में कि नहीं चेंज हो रहा? यस सर, चेंज हो रहा है। आप समझ रहे हो? जैसे मैंने आपको उस दिन भी एग्जांपल दी थी, मान लीजिए आपके पास कोई एक, यहाँ पे इसके अंदर कुछ, मान लीजिए एक गैस है, आपने इसको प्रेस किया, इसमें से गैस बाहर आ गई, तो कंट्रोल वॉल्यूम तो यही था जो ये कंटेनर था। यस सर। तो एट टाइम टी मान लो आपने इसको कुछ नहीं प्रेस किया था, तो इस कंट्रोल वॉल्यूम में कुछ था मास, जब आपने प्रेस कर दिया, कंट्रोल वॉल्यूम तो अभी भी स्टेशनरी है, क्या इसमें अमाउंट चेंज हुई कि नहीं हुई? यस सर, चेंज हो गई ना। तो दिस रिप्रेजेंट्स दैट अमाउंट एट टी प्लस डेल्टा टी। राइट सर, हमारा कंट्रोल वॉल्यूम भी चेंज हो सकता है, राइट? कंट्रोल वॉल्यूम के अंदर वो क्वांटिटी चेंज हो सकती है, आप समझ रहे हैं? ओके सर। कंट्रोल वॉल्यूम नहीं चेंज हो रहा क्योंकि हमने मान रखा है कंट्रोल वॉल्यूम इज नॉट डिफॉर्मिंग, नीदर इट इज मूविंग। तो ये इसी तरह से हो गया, जैसे अगर एग्जांपल, जो सबसे सिंपल एग्जांपल बुक में भी गिवन है, कि अगर आपके पास कोई डिओड्रेंट की बोतल है, उसके अंदर कुछ परफ्यूम है या डिओड्रेंट है, उसको, वो सिस्टम हो गया बेसिकली, जितना उसके अंदर डिओड्रेंट है। अब ये जो बॉटल है ये कंट्रोल वॉल्यूम है। यस सर, इसका वो नहीं चेंज हो रहा। टाइम टी पे जितना डिओड्रेंट है, जितना डिओड्रेंट सिस्टम है, वो वही डिओड्रेंट इस पूरे कंट्रोल वॉल्यूम में भी है। यस सर। और टी प्लस डेल्टा टी के बाद मान लीजिए आपने प्रेस कर दिया इसको और कुछ बाहर निकल गया, तो टाइम टी प्लस डेल्टा टी पे इस बॉटल, ये बॉटल फिर कंट्रोल वॉल्यूम ही है, इसके अंदर यस तो वो क्वांटिटी है वो तो चेंज होगी। यस सर, So हो that गई। is the meaning of that. That is n control volume at t plus delta t represents this situation, and n control volume at t represents this situation. राइट सर। हाँ जी, clear है? यस सर। So any doubts to anyone? This n2 t plus delta t can be written down as n control volume minus this dotted n1 part. So you get this n2 part at t plus delta t. हाँ जी, clear है ये? सर हम ये नहीं मान के चल रहे कि पूरा का पूरा सिस्टम मूव हो जाएगा तो 2 और 3 में ही बचेगा, जितना मास बचेगा कुछ अब कुछ आप 1 और 3 दोनों में होगा। आप इस एग्जांपल को देखो, अगर 2 3 मूव करके पीछे से तो फिर भी आ रहा है। यस सर। एक सेकेंड, ये क्या हो गया? हाँ, आप ये देखो, ये इस तरह से पीछे से तो आ ही रहा है ना। यस सर। इसका मतलब अब वो स्पेस कौन कवर करेगा जो बैक साइड से आ रहा था। आप इसको ये मत मान के चलिए कि ये एक सिंगल इंटरमिटेंट प्रोसेस है, यहां से साथ के साथ कुछ फ्लूइड आ भी तो रहा है। सर ओके। कॉन्टिन्यूसली फ्लूइड फ्लो कर रहा है यहां पे। ओके सर। आप समझ रहे हो? तो इसको भरेगा, फिर यहां से निकलेगा, फिर भरेगा, फिर निकलेगा। ओके सर। तो t प्लस डेल्टा टी पे
ये तो यहां पहुंच गया जो टी पे इस पे था, तो ये रीजन किसने फिल किया? जो फ्रेश आ रहा था। यस सर। हाँ जी, क्लियर है? यस सर। और ये पोर्शन कौन सा हो गया? जो मूव कर गया था। जो उस कंट्रोल वॉल्यूम से बाहर निकल गया। यस सर। और ये हो गया जो उसके अंदर एंटर कर गया। हाँ जी, क्लियर है? यस। So now I am putting it here. Say n system at t plus delta t now becomes equal to, when I make this substitution, I become n control volume at t plus delta t minus n1 at t plus delta t. So I have substituted this for this. I am only left in n3. So this is n3 t plus delta t. Likewise, n control volume at t plus delta t, sorry, n system at t is equal to n control volume at t. ये तो क्लियर है? दोनों इक्वेशन में कोई डाउट? This represent this situation and this represent this situation. So n system is equal to n control volume. This represent this situation. जितना कंट्रोल वॉल्यूम में था वही सिस्टम था। हाँ जी, क्लियर है? एक्सक्यूज मी सर, जब हम मतलब हमने जो वो एग्जांपल देखा सिलेंडर जब पानी में रखा था, ठीक है। लाइक फ्लूइड में, तो यस सर, तो सर जो जितना बाहर निकला उतना ही अंदर आया। कैन वी से दैट मास 3 इज इक्वल टू मास 1? अच्छा, आप ये कह रहे हैं जितना एंटर कर रहा है? यस सर। सर बेसिकली इसकी एप्लीकेशन मतलब इससे हमको क्या फर्क पड़ रहा है? इसमें देखो, इसमें तो ये जनरलाइज नहीं है। मान लो ऐसे होता, सर यू हैव फॉर इंस्टेंस अ कंटेनर। सर परफ्यूम बॉटल में तो समझ आ गया कि हाँ ओके, हमको पता चलेगा हाँ, डिफरेंस। ठीक है। तो उसमें मैं वही कह रहा हूँ, इस केस के अंदर क्या हो रहा है? आपको इस केस में ये लग रहा है कि जितना एंटर करेगा उतना एग्जिट करेगा। यस सर। आप यही कह रहे हो ना? यस सर। तो ये स्पेशल केस है एक जनरल केस का। जनरल केस क्या हो सकता है कि यहां से मान लो आपने एक टैप चला रखी है पानी की, इसमें से मान लो 10 kg पर सेकेंड आ रहा है, यहां से 1 kg पर सेकेंड निकल रहा है, यहां से 2 kg पर सेकेंड निकल रहा है। तो जितने अमाउंट से आ रहा है और जितने अमाउंट से निकल रहा है ये तो सेम नहीं है। राइट सर। तो इसका मतलब क्या हुआ कि 10 kg पर सेकेंड से एंटर कर रहा है और टोटल 3 kg पर सेकेंड से बाहर जा रहा है। तो किस रेट से इस टैंक में वाटर इंक्रीज हो रहा होगा? किस रेट से हो रहा होगा इंक्रीज? 7 kg पर सेकेंड। यस सर। क्लियर है? ओके सर। तो दैट केस जो आप कह रहे हैं, अगर ये केस लेंगे तब आपकी बात ठीक है कि जितना एंटर कर रहा है दैट इज n1 शुड बी इक्वल टू n3 in this case. But this is not the general case, but we are deriving for the general case, that is राइट। control volume can be this way also, जिसके अंदर कुछ accumulation भी हो रही है, कुछ मान लो कुछ और जनरेशन भी हो रही है, वो भी मैं बताऊंगा कैसे हो सकती है। हाँ जी, क्लियर है? यस सर। So this is n system at t plus delta t and this is n system at t, and you know that by your definition of a derivative, you know that dn by dt system can be written down as what? Limit delta t tends to 0. What should I write down? N system at t plus delta t minus n system at t upon delta t. ये तो clear है? Is that clear? यस। So I can write down here that dn by dt system is equal to n system at t plus delta t minus n system at t upon delta t, and here is the limit delta t tends to 0. And I can substitute these values because I know these values, so I get finally
n control volume at t plus delta t minus n control volume at t upon delta t, and here is the limit delta t tends to 0, plus, or I should put it here, minus n1 t plus delta t upon delta t, and here is the minus limit delta t tends to 0 plus limit delta t tends to 0 n3 t plus delta t upon delta t. So this is the expression, and any doubts in expression, please ask me if you have any doubts in this expression. I simply use the definition of the derivative because I know n system t at t plus delta t, I know n system at t. So I was clever enough to convert some of the terms to control volume so that I can build up a relation between system and control volume. Now, what is this term equal to? What is this term equal to? And anyone? What is this term equal to? dNCV by dt. D? NCV by dt. Okay. So I am writing down here dn by, हाँ जी बताइए. dn by dt control volume नहीं होगा. So dn by dt control volume. So this term is this. And what is this term? Now try to understand, which I was talking the other day also, that one is what is just entering the control volume, and 3 is what that is just exiting the control volume. हाँ जी clear है? हाँ जी clear है ये बात? Any doubts to anyone? Sir. हाँ जी बताइए. Clear. हाँ जी. सर एक बात ये समझ आ रही कि ये n1 और n3 इक्वल नहीं होने चाहिए. n1 और n3. यस सर, इक्वल नहीं होने चाहिए. हाँ ये इक्वल होंगे अगर ये इस तरह से सिस्टम है जो आप देख रहे हो. आप इसको इस तरह से सिस्टम सोच के देखो, क्या n1 n3 हमेशा इक्वल होंगे? नो सर. ठीक है, तो हम इसको जनरल केस के लिए डिराइव कर रहे हैं. एक्सक्यूज मी सर. हाँ जी बताइए. सर अगर हमें होल्स का मतलब जिस रेट से पानी गिर रहा है, हाँ. तो सर उसका एरिया अगर दिया हो तो उसके साथ भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं. हाँ. कंट्रोल वॉल्यूम की. हाँ तो वो आप ये कह रहे हो, जैसे एग्जांपल मैं बोलूं, जो आप ये कह रहे हो कि मान लो ऐसा सिस्टम होता है कुछ, मान लो ऐसे है कुछ, मैं एग्जांपल बोल रहा हूं. मैंने ये एग्जांपल ले ली कि मान लो इससे कुछ बाहर जा रहा है, इससे कुछ बाहर जा रहा है, इससे कुछ अंदर जा रहा है, इससे कुछ अंदर जा रहा है, इससे कुछ बाहर जा रहा है, और ये एरियाज पता है मेरे को. यही कह रहे हो आप? यस सर, समझ गया सर. ठीक है ना. तो एक्चुअली ये काम कर जाता है. आप कहोगे इसमें हम सीधा कर देंगे कि ये ρ1 a1 v1 पॉजिटिव है नेगेटिव है, आप सब कुछ कर लोगे. लेकिन ये टेक्निक काम कब नहीं करती? जब एक कॉन्टिन्यूअस सिस्टम है और उसमें हर एक पॉइंट पे कुछ ना कुछ इनलेट आउटलेट. समझ गया सर. Then you cannot use this simple phenomenon, simple expressions. ओके सर. आप समझ रहे हैं? यस यस. The power of Reynolds transport theorem will only be realized when you approach complicated systems. ओके सर. सिंपल सिस्टम में तो आपको लगेगा मैं इतना क्यों कॉम्प्लिकेट कर रहा हूं, मैं सीधा इसको देख लूं कि रो a1 v1 करके खत्म कर लूं कि एक जो निकल रहे हैं उनको एक साइड रख लूं, जो अंदर जा रहे हैं वो एक साइड रख लूं, मुझे पता चल जाएगा कितनी रेट से भर रहा है. यस समझ गया सर. So that is the case when it is a simple case. But we want to derive Reynolds transport theorem because we want to apply it to actual real life applications, and those do not involve such kind of systems. ओके सर. Clear है? यस समझ गया सर. And that leads to another part. Say this was some portion
this was dA and dA vector is say represented by this. तो मान लीजिए इस एरिया में से इस डायरेक्शन में v वेलोसिटी से फ्लूइड निकल रहा था, ठीक है। तो ऐसे ही v और dA हर जगह होंगे पूरी सरफेस पे। तो अगर मुझे टोटल निकालना है तो मैं कैसे निकालूंगा? व्हाट शुड आई डू? पहले इसमें बताइए, इसमें से कितना मास फ्लो रेट इन या आउट होगा? कैसे लिख सकता हूं इसको? रो dA into V. रो dA into V. v डॉट dA। Yes sir. हाँ जी, क्लियर है ये? रो v डॉट dA। तो मुझे बात बताइए, जब अगर अंदर आ रहा होगा फ्लूइड तो इन दोनों में एंगल क्या होगा? v और dA में Sir 0 degrees. अगर अंदर आ रहा होगा, मान लो ये तो v के डायरेक्शन है। Yes sir, सर 180 होगा। नहीं, जरूरी नहीं है ना, आप समझो ये बात। ये कुछ एंगल है थीटा, और v डॉट dA का क्या मतलब है? v dA cos थीटा। Yes sir. तो अगर थीटा की वैल्यू लेस देन 90 है तो इसका मतलब क्या हुआ? आउटफ्लो है कि इनफ्लो है? आउटफ्लो है। Yes sir. अगर थीटा की वैल्यू ग्रेटर देन 90 है तो क्या मतलब है? Inflow. ग्रेटर 90 का मतलब क्या हुआ? कि भाई मान लो ये तो एरिया की तो यही रहेगी डायरेक्शन, क्योंकि इट इज नॉर्मल पॉइंटिंग आउटवर्ड्स। मान लो v इसकी जगह ऐसे होता, तो एंगल ये होता। Yes sir. ये क्या है? ग्रेटर देन 90। Yes sir. इसका मतलब ऑटोमेटिकली क्या हो जाता? इट सो दिस डॉट प्रोडक्ट ऑटोमेटिकली अकाउंट्स फॉर वेदर इट इज इनफ्लक्स और इफ्लक्स। क्लियर है? once you know velocity, once you know the area vector, you need not bother whether it is influx or efflux. This dot product will take care of that sign. clear है? Yes sir. Anyone? clear है? Any doubts? Any doubts to anyone? So I'm coming back to this. So this was dN by dt control volume. And what is this equal to? Influx. And what is this equal to? Efflux. So minus influx plus efflux. हाँ जी, clear है ये? Now what can I write down this as? Influx and efflux. If it was mass, what can I write down this as? What can I write down this as? This was some body. This was dA. This was V. So I can write down this as M is equal to rho V dot dA. This is, say, small dm. So M will be equal to this. Is that clear or not? Any doubts to anyone? And clear? Okay. Thank you, sir. Okay. सर ये CS क्या है? क्रॉस सेक्शन एरिया। कंट्रोल सरफेस। यस सर, यस। ये पूरा जो सरफेस है ये कंट्रोल सरफेस है ना, तो मैंने हर एक पे इंटीग्रेट कर दिया। सर तो इसकी एप्लीकेशन ऑस्मोसिस वगैरह में होती है? हाँ, हर एप्लीकेशन में आएगा। यू विल डिस्कवर कि जो भी आप
कोई भी फ्लूइड फिनोमेना देखते हैं, यू कैन अप्लाई दिस रेनॉल्ड्स ट्रांसपोर्ट थ्योरम, जितना मर्जी कॉम्प्लिकेटेड है कोई भी. So that is the power of this theorem. Right. Okay. Thank you, sir. So I am ending the meeting now. We will continue with this tomorrow.